Okay, today we are going to continue with our lecture that is on graph matching. So first of all, we will take a little review of what we have done so far. First of all, we studied what is a matching. So a graph matching is creating a subgraph of G where there are no edges adjacent to each other. हमें एक ओरिजिनल ग्राफ दिया गया है, हमें उसमें से एक मैचिंग ग्राफ बनाना है जिसके अंदर कोई भी रिपीटेड या नॉट रिपीटेड लेकिन कोई भी एडजेसेंट एजेस नहीं होनी चाहिए। प्लस दो प्रॉपर्टीज और थी, वो थी कि दैट द डिग्री ऑफ वर्टेक्स each vertex in the matching graph should be less than equal to one thing, and second is that the number of vertices in the matching graph should be equal to the number of vertices in the original graph. फिर हमने तीन तरह की मैचिंग्स देखी थी, मैक्सिमल, मैक्सिमम एंड परफेक्ट। M3 इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमल मैचिंग बिकॉज इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा एज ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन M1 and M2 are both maximal and maximum also because they contain the maximum number of edges that can be there in the matching graph. Okay, and next thing what we did was perfect matching. Perfect matching का मतलब क्या है? Matching in which each vertex has exactly the degree of 1. ठीक है? Then we discussed what is a biparac graph, which is that if you can divide your graph into exactly two sets, okay, and there is an edge from one vertex from one set to one vertex in another set, this is called the bipartite graph. Plus, क्योंकि ये मैचिंग के लिए बनाया गया है, तो that means there will be only one edge from one vertex to second vertex in the second set. Okay, इसकी cardinality जब maximum हो जाएगी, that means the maximum number of edges that we can have, इसका मतलब क्या है? We have reached the maximum matching और उसमें और edges add नहीं हो सकती हैं. Then we discussed what is free node, जो matching का part नहीं है, matching and non matching edges, edges जो matching का part है और edges जो matching का part नहीं. Then we discussed what is an alternating path. Alternating path वो path होता है जो एक non matching edge, एक matching, एक non matching, एक matching और एक non matching, यानी alternatively चलता है path. और क्या alternating path augmenting path भी होता है, वो चेक करने के लिए path जहां से start हो रहा है और path जहां पर खत्म हो रहा है, अगर वो दोनों free vertices हैं, यानी they are not part of the matching edge, then it is called the augmenting path. ऑगमेंटिंग पाथ का फायदा क्या है? अगर ऑगमेंटिंग पाथ एग्जिस्ट करता है तो आप उस पाथ में एक और मैचिंग एज लगा सकते हैं. कैसे लगा सकते हैं? बाय इंटरचेंजिंग द नॉन मैचिंग टू मैचिंग एंड मैचिंग टू नॉन मैचिंग. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड yesterday. Then we discussed one basic algorithm of how we can find these things, how we can compute the maximum matching in the graph. So today what we are going to study is one more very important algorithm for finding the maximum matching in for a graph using the Elmond's algorithm. अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? Elmond's algorithm. उसका पूरा नाम क्या है? Elmond's blossom algorithm. तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा कि why we are going to discuss the Elmond's blossom algorithm is कि हमें इतना पता चल गया है कि what we are supposed to do is we are supposed to find the augmented paths. हमारी एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, किसी भी एक रैंडम एज से स्टार्ट कीजिए और ऑगमेंटेड पाथ्स को सर्च करना शुरू करिए. अगर आपको ऑगमेंटेड पाथ मिल जाता है तो हम लोग उसको इंटरचेंज करके एक एक्स्ट्रा एज लगा सकते हैं, मैचिंग एज लगा सकते हैं. हम हमारी एल्गोरिथम को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक ऑगमेंटेड पाथ एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी टर्मिनेट व्हेन देयर इज नो ऑगमेंटेड पाथ लेफ्ट. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द m ऑगमेंटेड पाथ्स इन अ ग्राफ. अगर ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स है तो बहुत ज्यादा पाथ्स हैं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट
that we can find an augmented path in that in a definite period of time. तो उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड हुआ था, दैट इज कॉल्ड द एडमंड्स ब्लॉसम एल्गोरिथम. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कॉल्ड द ब्लॉसम. Okay, and this comes from the theory called or the representation of a flower. So what does a flower looks like? Something like this. So what we are supposed to do is we are supposed to compute the paths which have blossoms. And then we can, you can say contract. Contract means reduce कर सकते हैं इन paths को by contracting the blossoms. Okay, so this part of the figure that you can see in here is called a stem. And this circle that you see or a cycle that you see is actually called the blossom. And this in total is called a flower. So what happens is we continue and we continue to find the augmented paths. And in case we encounter any blossom on the way, then we say that we can apply the contraction to reduce the size. Now, how do we find that a blossom has occurred? So let us continue. How do we know that a blossom has occurred? For example, if we are moving, let's say from A to B, and then we have something like this, that is C, D, something like E, F, and then back to C. You can see that there is a path from path to C, that is this one. And this blossom that you see, that is a circle formation that you see here. So one path is A, B, G, and C, something like this. Further, you have a cycle that is a blossom, which is an odd cycle blossom. What is an odd cycle blossom? That means there are 5 edges. Now, is there only one path to go to C? That is A, B, G, C? No, there is another path that is A, B, G, D, E, F, which is slightly longer path, but still there is a path to reach C. There you see, I can reach C. ये थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, जैसे A to B, B to C to D, something like this. तो ये कैसे है? If I want to reach to D, I can reach to A, B, and D. And I can also reach from A, B, C to D, something like this. So if you follow these arrows that I have denoted, it leads to the formation of the blossom. And when you find blossoms, obviously that you can apply the operation called the contraction. Now, and contraction helps to reduce the amount of time and the size of the graph. Okay, so what is the idea? The idea of exploring the M alternating paths from U, यानी किसी भी एक node से U, which is a free node or you can say an unsaturated node. So the idea of exploring the M alternating paths from U is recording for each vertex the vertex from which it was reached. कहां से कहां तक जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड रखते जाना है. एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लॉसम्स व्हेन फाउंड. तो हम लोग 2 चीजें मेंटेन करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो मेंटेन करते हैं, दैट इज सेट S एंड सेट T, with S consisting of all of U and all the vertices reached along the saturated edges.
and T will contain the set of all the blossoms, and S will contain a set of all edges that we have reached. ठीक है? So this is the main idea of the Edmonds blossom algorithm. इसमें initialization कैसे होगी? The initialization will be the S will contain the first node जहां से हमने start करना है, and T will be null to begin with. Okay, so let's move further. So iterations कैसे होंगी? Iterations will be if S has no unmarked vertex. अगर S के अंदर कोई भी unmarked vertex नहीं है तो हम लोग स्टॉप कर जाएंगे. इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑगमेंटिंग पाथ U से नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उस अनमार्क्ड नोड को हम लोग we will add that to the S. To explore from V, successfully consider each node that is Y which belongs to the set V such that the Y is not part of the T. अब अगर हमें कुछ ऐसा Y मिलता है, if Y is unsaturated by M, that means जो हमारा M augmented path है, if Y is unsaturated by M, then track back from Y. Track back from Y का मतलब क्या है? Expanding the blossoms as needed to report an M augmented UY paths. इसको जब मैं example से explain करूंगा, things will be very clear to understand. The thing is only to find whether an augmented path exists or not. If does not, then exit. If the path exists and you are finding unsaturated edges, then you have to expand back to see whether there are any blossoms and we need to contract those blossoms. If Y is part of S, यानी अगर जिस Y unsaturated की बात कर रहे हैं, if it is part of S, already S, तो that means हम लोग दोबारा उस नोड पर पहुंचे. यानी अगर A S के अंदर जा चुका है और हम दोबारा से A पर पहुंचे हैं, इसका मतलब क्या है? A blossom has been found. मैं आपको दोबारा बताता हूं. अगर ऐसे जाते जाते आप यहां पर पहुंचे विच इज A, आप उन सभी नोड्स को S में डालते जा रहे हैं जो आपको मिलती जा रही हैं. जैसे यहाँ पर B D A है तो B मिला आपने डाल दिया, D मिला, A मिला आपने डाल दिया. फिर आप किसी और पाथ से घूमते घूमते फिर से A पर आ गए हैं and A is already there in the S. That means Y is in S. That means a blossom has been found. And what we need to do is we need to suspend the exploration and contract the blossom. हमें blossom को contract करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? By replacing its vertices in S and T. T के अंदर उनको डालना पड़ेगा. हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे how this actually works. लेकिन the algorithm of Edmond and Blossom is only of two steps. One is what is the basic idea and how the iterations actually happen. मैंने आपको ये भी बता दिया है कि why we are using this algorithm, only because it is very difficult to process the M augmented paths. तो आइडिया क्या है? आइडिया इज अगर आपको कोई ब्लॉसम मिलता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है. आइटरेशन में आपको बता दिया है कि किस तरह पता चलता है कि ब्लॉसम हैज अकर्ड एंड किस तरह पता चलता है कि देयर इज नो ऑगमेंटेड path. And the next is that we are going to see an example, and from the basis of that we will see how the Edmond blossom algorithm actually works.